Welcome back to the Gradex Academy. So today we are discussing about one concept called as Lightning Combo Box. What is Lightning Combo Box? Lightning Combo Box, it is a drop-down menu that we can create on the front end. Usually we have one pick list values which we can fetch, but Lightning Combo Box allows us to create the front end drop-down menu, right? We use it when we wanted user to select one value from the many values. We can also set the default values for the Lightning Combo Box. Let's do explore it practically. So what we will create? We will create one component. As we all know, component has the three files: target file, template file, and controller file. Now in the template file, we will have one Lightning Combo Box. Lightning Combo Box is a Lightning component, right? That is having a default drop-down menu styling. Okay, so we will create one Lightning Combo Box. I'll name it Lightning Combo Box. Okay, in the Lightning Combo Box, right? I'll create one object here, store that object into one property, and that property I will map directly to the Lightning Combo Box. Okay. In this way, the object which is holding into this property will display into Lightning Combo Box. We'll do one thing, right? We will select one value from the drop down. The drop down is coming from the values of properties, and we will just have the value into a property, right? We will create one more property as a selected, right? We will fetch the value of Lightning Combo Box, right, by using event, and this selected property we will display here, right, on the front end, on the template file like this, right? And check whether we are getting the value selected from many values to one value. मतलब many values से one value select हो रहा है या नहीं हो रहा है, right? That we will select, see into a Lightning Combo Box. Okay, so let's jump to the practical. So I have created one component called Lightning Combo Box example, and inside this component, as we can see, three files. First is a template file, second is a JavaScript file, and third is a meta file. Okay. In the template file, as our requirements see, we need to create Lightning card. So I'll create Lightning card, and I'll name the Lightning card title equal to Lightning Combo Box example. Okay, perfect. Now I'll create one Lightning Combo Box component. I'll use this Lightning Combo Box component. Okay. What is this Lightning Combo Box? ये Lightning Combo Box क्या है? एक widget है जो provide करेगा हमको input field in the form of drop down. Okay. अभी Lightning Combo Box में we have a name. यहाँ पे एक name नाम का attribute है जो attribute string based Lightning Combo Box का name specify कर रहा है. So we will use it. So name equal to, right, select an option. I'll name it as a select an option. Then we have the placeholder also. Placeholder क्या है? Placeholder is actually a attribute in the Lightning Combo Box जो हमें एक प्लेस होल्डर दे रहा है, राइट? अगर हमने प्लेस होल्डर ये एट्रीब्यूट नहीं यूज किया तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट एन ऑप्शन ये प्लेस होल्डर आ जाएगा. ओके, नाउ आफ्टर दैट I will label it as a select a fruit. एक काम करता हूं मैं, right? In the JS file, I'll create one particular object containing the fruits, right? यहाँ पे मैं एक object create करूंगा containing the fruits, right? So एक काम करते हैं, right? So I'll just create one property fruits, and inside the property, I'll create one object containing the fruit, like containing one label and value. Let's say, so label is okay, perfect, enough, right? Last I will add perfect.
ओके सो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एक फ्रूट्स बनाया, फ्रूट्स में एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाया, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग लेबल एंड वैल्यूज। ओके परफेक्ट राइट। अब एक काम करते हैं राइट, ये जो लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स है, ये लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स को ऑन चेंज एक काम करते हैं राइट, एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑन चेंज राइट, ऑन चेंज राइट। I will create one particular function. So handle input change, input change. Okay. ये जो handle input change होगा, right? ये handle input change, right? यहाँ पे एक function create किया हमने. Okay. अभी इसका यूज करेंगे हम लोग, बाद में यूज करेंगे, फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वी हैव वन लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स। लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स में एक नेम है, सिलेक्ट एन ऑप्शन राइट, लेबल है सिलेक्ट एन फ्रूट राइट। एक काम करते हैं, एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, वैल्यू विल बी सिलेक्टेड वैल्यू, और आई कैन से दैट एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा मैं, सिलेक्टेड फ्रूट। ओके अभी ये जो प्रॉपर्टी है राइट, ये मुझे जावास्क्रिप्ट फाइल में भी क्रिएट करना पड़ेगा। So simple selected fruit. Perfect, right? We have a on change, and there is one more attribute called as options, right? If you can see here, options. Options is a list of options. मतलब it is a object जिसे हमें option का object pass करना है, right? We have created a object fruits, right? यहाँ पे वो map कर देते. So options equal to fruits. वंस अगेन राइट, एक लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स बनाया, उसमें नेम है, नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कॉम्बो बॉक्स राइट। ऑप्शंस विल स्पेसिफाई द ऑप्शंस, label will specify the text label for the combo box, value will be the specific value of an input element, on change is a function जो ultimately run होगा whenever we change the combo box. Okay perfect। अभी मुझे क्या करना है right, whenever this particular combo box input will change right, ये handle input change run होगा। एक काम करते हैं, इसमें इवेंट ऐड करते एंड ये जो सिलेक्टेड फ्रूट है इसका वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए जैसे ही हैंडल हैंडल इनपुट चेंज रन हो जाए राइट। सो दिस डॉट सिलेक्टेड फ्रूट इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ये जो सिलेक्टेड फ्रूट है राइट, इसे एक लाइटनिंग कार्ड के बाहर राइट इन द पैराग्राफ टैग आई विल मैप राइट, और यहाँ पे लिखता हूं मैं सिलेक्टेड ऑप्शन इज परफेक्ट राइट। सो जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल राइट, वैसे ही लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स में जैसे ही हमने एक प्रॉपर्टी मैच की राइट, सिलेक्टेड में वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ओके सो सिंपली let me deploy this component. Before deployment is expose equal to true right, target I will set up the target equal to lightning record page, save। Let me deploy this to the org। Perfect। org में login करने के लिए I will use the command called as open default org। Let me go to any record page। I will jump to the accounts record page। I will open any account record page। I will edit the page। I will drag and drop the component। So yeah, lightning combo box example, save 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 save। Okay perfect। Now here we have a drop down option, if I change orange, automatically the selected option is orange, mango, the selected option is mango। So this is called as lightning combo box guys। इंटरव्यूज में फिलहाल ये टॉपिक मतलब बहुत अच्छी तरह से लोग पूछते हैं। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और इफ यू वांट रियल टाइम यूज केस ऑफ lightning combo box, then you can comment on my video right, and I'll be having one example on real time usage also। Okay so that's it for the lightning combo box। Thank you।